Everybody and welcome to the very important webinar जो हम कर रहे हैं आज. We will be covering two topics. एक तो है deferment of income tax on जो unrealized अपनी इन्वेंट्री होती है जो आज इंडस्ट्री में काफी दिक्कतें आ रही है. That will be the topic number one. Topic number two, we'll be discussing about capital gains tax on exchange of gold jewelry. दोनों critical challenges and issues है which we are representing to the government. From the speaker side, we have our chairman Mr. Rajesh Rokde. अविनाश गुप्ता वाइस चेयरमैन, हरीश सोनी हमारे पास चेयरमैन, मुथु वेंकटरमन हमारे ZCM, कोनल दोषी फ्रॉम मॉडर्न इम्पैक्ट और हमारे लीगल एडवाइजर मिस्टर भाविन मेहता. सो आप देखो आएगा इसमें आ रहा है. हेलो प्लीज मितेश सबको म्यूट कर दे स्पीकर्स. जीजस मार्केटिंग टीम म्यूट करो सबको. So sorry for the interruption. So we'll start the session. Before that, we would like to introduce a new joining at GJC. We have our CEO, Mr. Madhusudan Desai ji. He has joined with us from 15th of December, and I'd like him to speak few words and start the session. Only three words. Happy New Year to all of us. May the gold prices and business grow for all of us in 2026. Warm welcome to all. Thank you, Madhusudan sir. Now, Chairman sir, request you to take lead और सेमिनार का हम स्टार्ट करते हैं सर वेबिनार आज का. थैंक यू मितेश एंड थैंक यू मधुसूदन जी. सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. 2025 बहुत ही जबरदस्त तरीके से ज्वेलरी इंडस्ट्री में वोलाटाइल रेट के मामले में रहा है. मतलब ये समझिए कि गोल्ड के अंदर 75,000 से लेके तो 1,35,000, 1,40,000 के भी रेट हम लोग ने करीब करीब जीएसटी मिला के देखे. और सिल्वर में भी ऐसा ही जबरदस्त उछाल गोल्ड इंडस्ट्री में आया है कि डबल से ज्यादा रेट हमारी इंडस्ट्री ने देखे. मुझे लगता है इतने सालों के इतिहास में ये पहली बार 2025 में हम लोग ने देखा है कि एक साल में इतना ज्यादा गोल्ड रेट बढ़ जाना. निश्चित तौर पे जब गोल्ड रेट बढ़ता है तो हमारे टैक्सेशन इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आता है, परेशानी आती है. और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल 3 मापदंडों पे काम करती है: प्रोटेक्टिंग, प्रोग्रेसिंग और प्रमोटिंग. तो ये 3 मापदंडों में जब हम लोग काम करते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में हम लोग वर्किंग करने के लिए पहुंचते हैं. कभी चेन्नई होते हैं, कभी दिल्ली होते हैं, कभी कलकत्ता होते हैं, या कहीं पर भी रहते हैं. तो ज्वेलर्स के साथ इंटरेक्शन हमारा काफी डायरेक्ट होता है और उस डायरेक्ट इंटरेक्शन में ऐसी ऐसी जानकारी हमारे पास आती है जिससे कि हमें लगता है कि ये इंडस्ट्री में ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और सबके अलग अलग व्यू है. आज की इस मीटिंग का मेन उद्देश्य यह है कि सारे एसोसिएशन ऑल ओवर इंडिया एक साथ आके इस सब्जेक्ट को लेके थोड़ा सा चर्चा करें कि एग्जैक्टली करे क्या. क्योंकि क्या होता है, जब भी हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो हमारी वॉइस एक होना बहुत जरूरी है. क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर अलग अलग वॉइस से अगर कोई जाता है तो गवर्नमेंट कंफ्यूज हो जाती है और वो कुछ नहीं करती है. आपने देखा होगा, अभी हम लोग आपस में थोड़ा सा बात कर रहे थे तो मैं फिर से नितिन भाई को कोट करता हूं. उन्होंने 2 बातें इंडस्ट्री के सामने रखी है कि एक तो ऐसा है कि जीएसटी की जो रेट है, जो 3%, वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडस्ट्री समझ के हमारे लिए रखी गई है. क्योंकि नॉर्मली जीएसटी 5% से 28% तक के अलग अलग प्रोडक्ट पे लगाया गया है, लेकिन 3% वाली इंडस्ट्री केवल और केवल हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री है. तो ये अपने आप को एक विशेष बनाती है. सेम ऐसा ही जब टैक्सेशन को लेके जब बात आती है या टैक्सेशन के साथ में जब कभी भी कोई भी बात आती है तो जीजेसी बढ़ चढ़ कर इस पे सामने आती है. मुझे कुछ ग्रुप में मैंने बीच में पढ़ा भी था कि कुछ अलग एसोसिएशंस के समर्थक या समझिए कि जिन्हें शायद ये पसंद नहीं आया या पसंद आया, आई डोंट नो, कि जब हमने ये टॉपिक चर्चा करने के लिए डाला तो वो बोले कि ये टॉपिक तो है ही नहीं चर्चा करने का. लेकिन ये भी उतना सच है कि जब कभी भी हम लोग अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो सभी लोग इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं. जीजेसी एज ए एपेक्स बॉडी अपनी जिम्मेदार बॉडी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी से एक हमारे ऑल एसोसिएशन से एक कहीं ना कहीं मैंडेट लेने की इच्छा रख रहा है. ये मैंडेट अगर हमें मिल जाता है, खुल के आज की इस मीटिंग में चर्चा होती है, तो ये चर्चा के आधार पर हम लोग दिल्ली में एक बात कहेंगे जिससे कि आज के इस सब्जेक्ट का एक कहीं ना कहीं सार लेके हम लोग उनके तक के वहां तक के हम लोग बात रखें. आज हमारी ये 6 बजे की मीटिंग स्टार्ट होने से पहले हमने बहुत आपस में भी मंथन किया और आपस में सबके व्यूज अलग अलग थे. इंडिविजुअल मेरा व्यू अलग था, वाइस चेयरमैन का अलग था, पास्ट चेयरमैन का अलग था, हमारे लीगल एडवाइजर का अलग था, हमारे कुछ कोयम्बटूर से हमारे प्रेसिडेंट मुथु सर है, उनके जो ऑडिटर है उनका व्यू अलग था, हमारे पास्ट चेयरमैन का व्यू अलग था.
तो व्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट के पास लेके जानी है तो उसके पीछे बेस होना बहुत जरूरी है। और वो बेस अगर हमारे पास सही रहेगा तो शायद हम लोग हमारे इंडस्ट्री को और प्रोटेक्ट कर सकेंगे। और जब प्रोटेक्शन की बात आती है तो मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी खबर भी सुनाता हूं। वैसे तो जीजेसी ऑल ओवर इंडिया में काम करती है, लेकिन पहला काम विजिलेंस कमेटी बना के हमने महाराष्ट्र में करके दिखाई है, और ये जीजेसी का ही श्रेय है कि जीजेसी ने कहीं ना कहीं यहाँ के ज्वेलर्स को, स्वर्णकारों को और सराफों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हम ये पूरे हिंदुस्तान में करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जीजेसी केवल एग्जीबिशन यही करती नहीं है, तो प्रोटेक्शन के लिए ऑलवेज जहां कहीं भी लॉ में अटकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग वहां खड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पुनः एक बार यही कहूंगा कि आज की मीटिंग में आप सभी लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही हम अपनी अपनी बात कह देंगे, तो कहने के बाद आपसे रिक्वेस्ट रहेंगी कि आखिरी में हम लोग इस पर खुली चर्चा करने वाले हैं। मुझे पता है आज की मीटिंग काफी लंबी होने वाली है, लेकिन व्यूज अलग अलग सबके रह सकते हैं, और सबके व्यूज हम लोग नोट आउट करने वाले हैं। नोट आउट करने के बाद मेजोरिटीज लॉ, ज्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं, उस आधार पे हम लोग कोई ना कोई निर्णय लेने वाले हैं। जैसे कि आज की इस मीटिंग के जो दो सब्जेक्ट थे कि डेफरमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं के कारण हमें बहुत ज्यादा टैक्स इस साल आ रहा है। तो आज की सलाह कल डालना, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो टैक्स हमें कल भरना है या आज भरना है उसको हम लोग कल के लिए डाल देंगे, तो शायद हमारे लिए तकलीफ बढ़ सकती है। हमारे इंडस्ट्री में दो मेथड नॉर्मली हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होती है। एक स्टैंडर्ड होता है कि एवरेज आउट करना स्टॉक को, और दूसरा होता है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, जिसे फीफो भी कहा जाता है। तो दोनों मेथड फिलहाल ये नॉर्मली हमारे इंडस्ट्री में चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही टैक्स ज्यादा आने के कारण हमारा स्टॉक कम होते जा रहा है। तो सबकी अलग अलग दलीलें हैं, और वो दलीलें शायद कुछ एक्सेप्टेबल है और कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए खुली चर्चा हम लोग करेंगे। एज ए चेयरमैन होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप सबका सुनूं, और सुनने के बाद जो इंडस्ट्री के लिए सही है और इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकता है, इंडस्ट्री को सेफ गार्ड कर सकता है, वो मेरा दायित्व मैं समझता हूं कि वो मैं कंप्लीट करूं। तो शायद आज की मीटिंग का आखिरी जब सार निकलेगा, वो सार हमारे लिए बहुत काम में आने वाला है। मेरा आप सभी से यह रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारी खुली चर्चा में जब कभी भी हम लोग बात करेंगे तो अपना मत जरूर रखिएगा, लेकिन कहीं पर भी हमें किसी को टीका करने के लिए हम लोग आज यहाँ नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक मत बने, एक राय बने। और इंडस्ट्री के बारे में एक ही कहूंगा कि जिस तरीके से अभी इंडस्ट्री चल रही है, और गवर्नमेंट भी इस बार बहुत ज्यादा ध्यान देके इस इंडस्ट्री को देख रही है। आपने देखा होगा HUID ट्रांसफर करने की बात भी जल्दी ही गवर्नमेंट लाने जा रही है। सिल्वर पे HUID मैंडेटरी नहीं लेकिन वॉलेंटरी आ चुका है। आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा होने वाली है। तो वैसे भी ये इंडस्ट्री ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती है। भविष्य में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, इसके ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है। वो दिन दूर नहीं है कि गवर्नमेंट खुद हमारा बैलेंस शीट बना के आप तक के पहुंचा दे। तो वो दिन बहुत पास में है, क्योंकि AI जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी अवेलेबल है। SFT के चेकिंग अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं कुछ जगह में। तो हमें वन वॉइस, एक आवाज में बात करने के लिए आज की ये मीटिंग हम लोग ने ऑर्गेनाइज की। मैं पुनः एक बार आपको शुक्रिया अदा करूंगा, आपने पेशेंसली मुझे सुना। आज के इस मीटिंग का हमारे जो एक्सपर्ट है इसके ऊपर जरूर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता जी, आप अपने विचार रखेंगे। यस अविनाश भाई। Good evening, everyone, and a very, very happy New Year to all of you. And this new year is bringing a lot of challenges to the industry. And one of the challenge which is going to be there for us is the taxation. So when we were preparing the budget, there were a lot of people who were talking to us to represent to the government on the taxation on the closing stock valuations. And we got a lot of suggestions from all the members. For example, some people said, why don't we talk about LIFO, which is already scrapped in 2016? So that is not a part of the
this thing itself. So we are left with only two things, that is FIFO or the weighted average method, and majority of the industry is doing weighted average method. So I think that was the basic thing. Now then one suggestion came of deferment of tax, which means that in case कोई भी हम जो टैक्स हमारा बनेगा 31 मार्च को, उसको हम एक साल के लिए डेफर करें विदाउट इंटरेस्ट। ये हम एक सरकार से के सामने मांग रखें, जिससे कि हम ये जो टैक्स आज भरना है हमको, वो हम इन्वेंट्री को तोड़े बगैर कमा करके उसी इन्वेंट्री के साथ में हम वो टैक्स भर पाए। लेकिन उसके भी चैलेंजेस सामने हैं कि अगर अगली साल भी इसी तरह से वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे ऊपर डबल टैक्सेशन की मार पड़ेगी और उस समय पे हमको टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा शायद। सो ये एक चैलेंज भी हमारे सामने आया हुआ था। फिर एक और सजेशन आया कि लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये हम सजेस्ट करें सरकार को। सो दिस इज द सेकेंड सजेशन विच केम। तीसरा एक सजेशन आया कि एक बेस इंडेक्स जैसे स्टॉक मार्केट का होता है, उस तरीके से हमारी स्टॉक की जो इन्वेंट्री है उसका हम ये बात करें कि 1/4/2024 का हमारा जो एवरेज क्लोजिंग स्टॉक है, हम सब ज्वेलर्स का अपना जो क्लोजिंग स्टॉक का एवरेज 1/4/2024 को है, उसको हम बेस बना दें और उसको उसके बाद में हमारी जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स किया जाए। ये एक हमारे पास में तीसरा सजेशन आया। चौथा एक सजेशन आया है कि हम सरकार को ये बताएं कि वी शुड टॉक इन द लाइंस ऑफ कि हमने इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, हम 100 किलो सपोज है या 50 किलो है, तो उसी बेसिस के ऊपर हमको इन्वेंट्री के बेसिस पे होना चाहिए और सिर्फ हमारा जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है उसके ऊपर हमको टैक्सेशन होना चाहिए। जो इन्वेंट्री की वैल्यू है उसको आप छोड़ दीजिए। सो this kind of suggestions have come. So what we thought internally ki let us have an open discussion. We understand from each of our members and associations what and how we can move forward to give the suggestion to the government in a concrete way, wherein the trade can accept and the government can also accept. So it's an open forum जिसमें कि हमारे पास्ट चेयरमैन एंड आवर legal expert Bhavin bhai will speak, and then everyone can put in their opinions, and then we will move forward. This is my submission. Thank you very much for listening to me. Thank you very much. Yeah, Avinash bhai, thank you very much. Now I request our past chairman Haresh bhai Soni, so please give your view on this. Very good evening, everyone. First of all, our dear chairman Rajesh ji, vice chairman Avinash ji, past chairman Nitin bhai, all other panelists and all my jewelers friends, wish you all the very best for the 2026. मैं सबको अभी विश करूंगा कि हमारी क्वांटिटी बढ़े ये साल में। आज जो हमारी बर्निंग इश्यूज है, जो टैक्सेशन रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग सब आज मिले हैं, तो उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। दो टॉपिक है आज हमारा कि एक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो है, जैसे मैं सोच रहा था कि वेरी गोल्ड एंड सिल्वर ने कुछ अलग बिहेवियर किया है ये साल पे। ग्लोबली ट्रेडिंग कमोडिटी जो है बहुत वॉलेटाइल रही है, तो डिस्प्रपोर्शनेटली इन्फ्लेटेड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के ऊपर हमें टैक्स भरना आता है, तो उसमें हमें आगे क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग ने आज मीटिंग रखी है। तो जो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल मार्केट के अंदर वैल्यूएशन मेथड को हमें आइडेंटिफाई करके ज्वेलरी इंडस्ट्री को ओवरऑल बेनिफिट कैसे होता है, वो हमें सजेशन देना है। क्योंकि 1 फरवरी को बजट है, टाइम बहुत कम है और हमें आगे उनको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना है। जैसे कभी भी हम रिप्रेजेंट गवर्नमेंट को करते थे, तब उसमें गवर्नमेंट ग्लोबली पिक्चर देखती है। ऐसा नहीं कि भाई एक पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री को कैसे बेनिफिट दिया जाए, बट वी हैव टू एक्सप्लेन इन सच ए वे कि ज्वेलरी इंडस्ट्री रिक्वायर्ड दिस काइंड ऑफ फेवर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे अविनाश जी ने बताया कि हमारे पास 3 to 4 ऑप्शंस हैं। वो 4 ऑप्शंस में से विच एवर इज द बेस्ट ऑप्शन वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन की मेथड है, उसमें हम स्टॉक फ्रीज करके
जो ट्रेडिंग हुआ जो साल में, वो साल की प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के हम हमारा कर सकते हैं। उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या है वो डिसाइड करना है, उसके बारे में फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये जो है उसमें जैसे अविनाश जी ने बताया कि जितने 4 ऑप्शंस है वो हमें आगे बताना है। दूसरा जो अपना मेन कैपिटल गेन टैक्स का जो इश्यू है, आज काफी समय से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे कि कैपिटल गेन टैक्स जो अपना गोल्ड ज्वेलरी की बार्टर हो रही है उसके ऊपर से निकलना चाहिए। क्यों? बिकॉज कि आज गोल्ड ज्वेलरी जो बार्टर हो रही है, इमीडिएटली उसमें कोई गेन नहीं है, सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है। तो कन्वर्जन में हमारी एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए। जो अपना कैपिटल गेन टैक्स की जो सेक्शन है उसमें से, चाहे आज हम रियल एस्टेट की बात करें तो एक हमने रेसिडेंस लिया है, जब रेसिडेंस बेचते हैं तो हमें दूसरे रेसिडेंस लेने तक 1 साल के अंदर हमें वो एग्जाम्पशन मिल जाता है। तो ये तो हमारा स्त्रीधन है, इसमें कोई हमारा कैश आउटफ्लो नहीं है, सिर्फ बार्टर है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी है कि भाई एक्सचेंज की गोल्ड जो ज्वेलरी है उसमें हमारी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए, और ये फेवर हमें लेनी चाहिए। क्योंकि अभी काफी सारे इश्यूज अभी क्रिएट हो रहे हैं और उसमें हमें गवर्नमेंट को अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम अच्छा रिपोर्ट अभी जो टैक्स पेयर्स जो अभी अपने कैपिटल गेन टैक्स भर रहे हैं उसको भी अभी थोड़ा सा इंजस्टिस हो रहा है कि एक्सचेंज में कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है। तो ये 2 पॉइंट हमारे लिए बहुत बर्निंग पॉइंट है और दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से एड्रेस करके हमें आगे ले जाना है। जैसे कि जो टैक्सिंग सच ट्रांजैक्शंस डिपार्ट्स फ्रॉम द कोर प्रिंसिपल that tax should be levied on real income and real gains, not notional और paper gains। तो यही बेस पे हमें जाना है और दूसरी इंडस्ट्री का कंपैरिजन देके कैपिटल गेन टैक्स में हमें रिलीफ लेनी है और गवर्नमेंट के हमें बताना है कि भाई एक गोल्ड ज्वेलरी स्त्रीधन है और दूसरा ये स्त्रीधन को हमें प्रिजर्व करना है। तीसरी बात है कि जितना हम रिसाइकलिंग को प्रमोट करेंगे तो उतना गोल्ड हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगी नहीं और हमें इंपोर्ट के अंदर बेनिफिट रहेगा। तो ये सारे सजेशंस हम आगे गवर्नमेंट को देके इसके बारे में रिलैक्सेशन लेने की हम कोशिश करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट के ऊपर आज हमें डिस्कशन करके इंडस्ट्री का रिव्यू लेके हमें इमीडिएटली गवर्नमेंट के पास जाना है। थैंक यू सो मच। Yeah, thank you, Harish bhai. Now I request Mr. Mithu. He is our ZCM and president of Coimbatore Jewellery Association. Yeah, Mr. Mithu. Sir, namaskar to everyone. Sir, we thank GJC of giving this an opportunity to the whole country to deliberate the main issue which is we are going to face on 31st March. So already we have given our representation to the chairman Rajesh ji at the ZCM meeting, and Avinash ji also was there. Everyone was also there, and our Bhavin Mehta consultant also was there. So it is our kind submission that we have to be together and we have to see on the both sides. We have to give an assurance to the government that at any point of time this tax will reach the government, and also that the government should help the people, because government is for the people, and for the people it is the nature of the government. So we give a strong representation that what is required to the industry now, because it is a burning issue that previously, if before 4 5 years if my stock is 10 kilos, now my stock has been depleted for 22% by paying of tax. If I have not eroded my stock, I would have been gone to take the increase my liability from the bank. So this is the thing happening in the industry now. As a manufacturer, I think many people are there in the Zoom meet. Almost 251 people are there. Even the retailers also, they are much affected, and the manufacturers are more affected. So this is the very burning issue is now, and we have given that in the weighted average method, let we have a separate gram based metal ledger, so that we replace the stock in that. And if my stock increases, if my grams of gold increases from the opening stock, I will pay the tax. And whatever the value addition we are charging in the bill, it comes into the profit and loss account. Definitely we are bound to pay for that actual taxes which is going to be there. So if we all to be in a single voice,
Even Avinash ji also has given an one more suggestion that why don't we go for an deferred tax to be paid in different parts when it was during the time of Corona, the system that, sir, whatever thing, even after the 6 months or 7 months or 8 months, we have to dilute the stock, then only we are able to pay the tax now. So it is my kind suggestion, everyone to be in a single voice. So the core committee of our GJC helps them to take the issue to the revenue secretary or the ministry of the finance or somebody who is responsible for to change the ICDS system, ICDS 2, because for this we need not to go to the parliament. They can do, they can put a small amendment in that, and they can favor the industry in this. So this is my suggestion. So I ask the chairman to give the permission to my auditor. He is in the Zoom now. He is in Tirupati, and now he has stayed there in a room that he want to express with all the terminology, because we are all business people. We don't know how to use this terminology as per the Act of Income Tax. So I request the chairman to allow my auditor, Mr. Nagaraj, to deliberate something what he has found and what he has made, which can be the solution for this issue. Thank you, sir. Muthuji, we can allow, and not more than 5 minutes, please. Yes. Go ahead. Yes. Yeah. Mr. Nagaraj, you please come to the screen. Jairam Nagaraj, no? Yes. Yeah. Mitesh, please unmute Jairam Nagaraj. Yes, sir. I think, Mr. Jairam, you can do it yourself. Hello, Jairam ji, you can unmute yourself. No, you muted again. Jairam ji, you need to unmute. Now it's okay. Yeah, please. Good evening to all gentlemen, and I am very happy to address the gems of India. We are all the gems of India, and it's my pleasure to present my suggestions to this August gathering. First of all, wishing you all a very happy new year. Let the gold prices decline, and we shall have a very good business because of that. Wishing you all success in this year. First of all, can I be permitted to share my presentation PPT and Excel? Mitesh, you please help him, Mitesh. Just a second, Jairam ji, I'll make you co-host, then you can share the PPT. Just a second. Yeah, now you can share, Jairam ji, you can share the screen. Yes, sir. Are you able to see, sir? No, you're not. No. You need to share the screen, sir. Screen is not visible. Yeah, now it started. Now it's okay? Now it is visible. Go ahead, sir. Yeah, okay. Yeah, sir. Please explain. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போங்க. Okay, fine. Yes, Nagaraj ji, please go ahead. Yeah. See, this is we are requesting the government to have a real income-based taxation for gold jewelry sector. That is the need of the hour. Okay. Real income-based taxation for gold jewelry sector. The presentation contains 12 slides. First one is the title and purpose. We will go to the slides directly.
It is continuous rise in gold prices, which everyone knows about it. The tax outflow is done without any matching cash flow due to sales. It is only the closing stock which increases, the value of the closing stock increases, due to which we are paying uh, income tax due to notional profits which is embedded in the closing stock without any real cash realization. Closing stock valuation driven by real prices artificially inflates taxable income. Working capital erosion takes place. This taxation of unrealized gain severely erodes the working capital crucial for business operations. Impact on the jewelry trade. It is a looming crisis. Due to increase in prices, there is difficulty in the replenishment of the stock. Reduction in stock quantity year on year. Notional and additional taxation on closing stock. It is a stress on MSME jewelers. Risk to employment and artisans. Above are the genuine hardship faced by the jewelry industry. When there is a steep fall in prices of gold, and when weighted average method of valuation of closing stock is adopted, it will result in a loss or lower in profits, and even taxation will come to a minimum. Deferment of income tax. That is the topic of the day. The rising gold prices significantly impacts the financial health of the jewelers in India. The continuous price rise inflates the value of the closing stock, leading to notional profits being taxed even without actual realization. Under proposed scheme, tax is not avoided but only postponed when stock is converted into sale, and hence there is no tax loss for the government. This is going to be the solution which we have proposed. Indian judicial support the real income theory. What is the real income has to be taxed and not the notional or artificial income which has to be taxed. We have got a judicial background in which it is stated that only the real income has to be taxed. How we propose it. This is the main crux of the presentation. Addressing gold taxation. Inventory value at cost or realizable value which is lower. This is the present situation. No taxation of unrealized gains by adopting replacement and replenishment based accounting. This is a new type of accounting which we are suggesting to the government. See, everybody knows that when we are able to sell 25 grams of gold jewelry, we will immediately purchase 25 grams of jewelry in the open market. So that is happening every day and night throughout the country also. So there is no actual gains we are making when we sell any product. We are equally equal of the weight we are replacing it. So that should not be considered for the sake of taxation. If we are going to adopt replacement and replacement based accounting, then only the value addition will be taxed. Income tax only on value addition. Gold price appreciation ignored for taxation through reserve creation. This is one more method which we can do it. What we can do is we can create a reserve. In that, whenever there is any increase in gold prices, that has to be transferred to a reserve. And Nagraj whenever sir, gold Nagraj prices sir, come down, yes, Nagraj sir, yes, sir. Nagraj sir, Yeah, Nagraj tell sir. me. Yeah, Sir, please don't yes. do all the slides. You just give the brief where, what you want exactly to be done. Because if you are running through this, it will go on till the last day. So, because everyone is there, so it will be very difficult. Okay, So, what is your suggestion? You just show that. okay. This is the first Anna, suggestion. you come to the calculation what we are facing the loss for the past 4.5 5 years. Yeah, Better I you can come. show that, but this is the suggestion which we have to take into
account. No, this you can submit it to This us, is sir. We will look into that. We will look into that. But what is your okay. exact suggestion? What is that you want to show? It will be better because otherwise everyone will get into this and nobody's opinions will come. Okay. So I'll just run very fast. You can even read the title, replenishment based accounting. That will be the first proposal. Second proposal will be tax on realized value addition only. Third proposal will be inventory price fluctuation stabilization reserve. That is the third proposal. Fourth proposal is already in ICDS 2, banking sector have been given exemption. So jewelry sector can also be given exemption, and one of the best method in this high price volatility, high increase in gold prices will be LIFO. This is the sector specific ICDS. Our proposal is the last proposal. In that you can see that sector specific ICDS, which can be done by the government. Now I'll go to the next one. அண்ணா சொல்லி முடிச்சிருங்கண்ணா. Yes, I'm opening it. Yes. See, this is a demo for a wholesale jewelry manufacturer. First year we have taken as 2020. Actually, the basic assumption is that he is getting only 0.5%. That is only half that he is getting. 916 will be the gold value. 4% will be the making charges. 0.04% will be the hallmarking charges. 0.5%, only half tax is the profit for the manufacturer. So the total value of the sale will be 96.14. Assumption we are taking only income tax at the rate of 25% plus 4% cess, which will come to 26% altogether. Screen not shared. So, are you able to see the screen? No. Yeah, Nagaraji, we are. No, it is not coming in the screen. Mitesh, you put that summarized presentation and matrix. That one screen is enough. So is the presentation there on the screen, sir? Hello? Yes, it is The visible. presentation is there on the screen. Yeah, but we can't see the calculation. So whatever calculation you're mentioning, it's not visible. See, my screen has been passed. Sir, you have to stop sharing and again share the new screen. Then it will come. Nagaraj sir, Yes. that summarized presentation and matrix, that is enough. You can show that. We understood your presentation. Now I request our one more speaker, Mr. Kunal Doshi give his view, and after that our legal consultant, Mr. Bhavin Mehta will explain his view. So after that we will open the forum for all of you. Yeah, please, Kunal sir. Ji. Good evening, friends. Thank you, Chairman and Vice Chairman, for giving me this opportunity to speak to you all. As most of the points have already been covered and the various options have already been given out by the earlier speakers, I would just add one level of statistics which I'm sure everybody is aware, but just for the record, I will say that if you have an opening stock of say 100 kilos on the 1st of April, at a value of 90,000 rupees, this is I'm talking in terms of 24 carat. And the closing stock we assume will be a 1,40,000 at the end of 31st March, just for calculation. And the profit is about 55% on the value from the opening to the closing.
On that 55%, we are paying at 33%, approximately 18 kilos of gold. So my stock of 100 kilos, I have to pay 18 kilos as taxation for the difference in the valuation of opening and closing. Now that 100 kilos, if I have rotated 4 times in a year, so it becomes 400 kilos. So and my profit margin is, say, for a wholesaler 1.5%. So on 400 kilos, I have earned 6 kilos, and on which my tax liability is 2 kilos. But my taxation liability on the valuation change is 18 kilos. So I'm paying more than what I have earned. And this has been happening for the last 2 years. And now it needs to be addressed. And we need to take comparison from uh, other countries about what is the structure of income tax over there. And since, as has been pointed out earlier, that gem and jewelry has a special space in the ministry, we need to really pursue this so that our inventory is not affected. This is, I'm talking about gold. Silver will have a bigger issue because the appreciation is 180%. And palladium, the appreciation is close to 125%. So here the valuation, if we look at the statistics, it changes more than gold. So I think that is what needs to be addressed. And I will like to thank everybody and wish everyone a happy new year in the face of such good valuations that is happening. And best of luck to everybody. Thank you for the opportunity. Yeah, thank you, Doshi ji. Now, Bhavin bhai, please go ahead from your side. Yeah. Yeah. Good evening, everyone, and wish you all a very happy new year. So definitely the concerns which everyone has put forth, जो भी आपकी सबकी मैं समझ रहा हूँ कि सबका पेन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है कि जो भी replenishment मॉडल अपन यूज कर रहे हैं, the replenishment model which we are having, cash flows nahi hai to pay the tax, and that is the real concern what we are trying to face right now, that on the notional income or the phantom income which we say in the income tax perspective, on that phantom income we have to pay the what you can say income tax, but there is no cash flow whereby we can pay the tax. Just trying to understand that what people have in their mind. Okay, the one point is very clear that they don't have money to really pay the tax, and how they can pay the tax is, जैसे सबने majority ने बताया कि आपको really आपका gold बेचना पड़ेगा, and if you sell the gold then only आप जाके उसका tax भर पाओगे. So that is a real concern, but we have to see that how this can fit within the framework of law. When we go to the ministry, we just say कि sir हमको आज LIFO दे दीजिए क्योंकि हमको बहुत problem आ रहा है. The government will say कि भाई you are not the only sector. We say that we are a special sector. We have got a specialized rate from the government. There are even other sectors. You take an example of real estate. You have real estate where the tax is something like say 1%. आपको 1% GST है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही सेक्टर है जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है. What I am really trying to drive the point is, what is the basis which we say? Agar prices of gold keep on increasing day in, day out, if this year, next year, the prices still keep on increasing, where will the government say, you के भाई आपको deferment कर दो तो 1 साल का 2 साल हो जाएगा, 2 साल का 3 साल हो जाएगा, शायद गवर्नमेंट के लिए वो रिकवरी भारी पड़ जाएगा, बहुत सारे जन शायद डिफॉल्ट कर देंगे. We're talking something about the benchmark price, which many people were saying, okay, if I have an X amount of inventory in the 1st of April or maybe 31st of March, वो इन्वेंट्री को मेरा बेस पकड़ लीजिए, जो मेरा वैल्यू एडिशन होता जाएगा उसके ऊपर सिर्फ आप टैक्स कीजिए, बाकी मेरे इन्वेंट्री को रहने दीजिए. जिस दिन मैं रियलाइज करेगा और मे बी मेरा वैल्यूएशन या इन्वेंट्री बढ़ेगा, उस दिन आप मेरे से टैक्स ले लीजिए. आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रपोजिशन, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू. Uh, Mr. Jairam ji, I would really appreciate that what you have taken, and Muthu sir also, which you have taken a pain to see that what other countries are doing and where वहाँ का क्या taxation है, वो हिसाब से you're trying to rope in somewhere. I'm pretty much clear over there. The IFRS and all this, they are saying that you cannot have a taxation system where that deferment is allowed. So maybe you say speak of China, maybe you say of some other countries. Even I spoke with many other people, or maybe the people who are doing the big fours and all, that what exactly China is doing or what exactly Turkey is doing. What I learned from those guys is
It is very clear. It is lower of cost or net realizable value, which is being followed worldwide. I don't know of the small countries which you told of Thailand or somewhere else कि वहाँ पे क्या रहा, I'm not aware. But at least of these bigger guys where there is the highest consumption of gold in the world, जहाँ सबसे ज्यादा consumption हो रहा है, वहाँ पे ऐसा कोई system नहीं है. We people are saying that we have been using weighted average method, we have been using FIFO systems and all that. So yes, that is what which has been going everywhere. Uh, Overall, if we see overall, yes, the government will say कि मैं समझ रहा हूँ आपका जो प्रॉब्लम है वो बराबर है, आपको इशू है, मैं मान्य कर रहा हूँ, बट मेरा भी इशू है. द एंटायर कंट्री हैज बीन वर्किंग समवेयर ऑन एडवांस टैक्स सिस्टम बेसिस, जहां पे गवर्नमेंट एडवांस टैक्स बेसिस के ऊपर टैक्सेशन ले रहे हैं. तो मैं आपको क्यों सिर्फ ये अलग से ये एक मैं दे दूं? यू सेइंग दैट द गोल्ड प्राइसेस गो ऑन अप बाय अनप्रेसिडेंट वे, बाय जैसे कुणाल जी बता रहे थे, इन सिल्वर यू हैव समथिंग लाइक 180%, मे बी प्लैटिनम 125%, और मे बी gold you have more than 50%, there is an increment. Yes, this was the case even with the oil marketing companies or maybe steel companies या और भी बहुत सारे commodities. You take an example of copper, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, वहां भी प्राइसेस बिक रहे हैं. एक इंडस्ट्री को दे दिया तो सब लोग आ जाएंगे, तो गवर्नमेंट बोलेगा मेरे पास तो पैसा ही नहीं रहेगा, इवन आई हैव टू रन द शो एंड एवरीवेयर. सो फ्रेंड्स, आई एम विथ यू. ऑब्वियसली आपका जो कंसर्न है मैं वो आगे लेके जाऊंगा, बट स्टिल वी कुडंट फाइंड एन एमिकेबल सॉल्यूशन. Someone was talking something like a reserve account. I think this is what even I had proposed, that we have something like an reserve account जहाँ पे ऐसा करे कि जो भी मेरा टैक्सेशन होगा वो मैं रिजर्व अकाउंट में डाल दूंगा. The moment I get cash flow, मैं वो टैक्स भर दूंगा. But even that is not acceptable. I spoke with many people. I even spoke in the ministry also. They told that Bhavan, this is not possible. This is something which we cannot approach it. So we need some solution whereby it is a win-win, जो गवर्नमेंट के लिए भी सही रहे और इवन फॉर द ज्वेलर्स वो सही आ जावे और अपना टैक्सेशन ये जो है. So I would like Rajesh bhai, Avinash ji, let us keep the floor open and ask someone else from the industry that आपके माइंड में क्या है, आपके पेन पॉइंट प्लीज मत बताइए, क्योंकि पेन पॉइंट हम सबको पता है कि आपका पेन पॉइंट क्या है. इफ यू गाइस हैव एनी सॉल्यूशन, यू प्लीज ब्रिंग इट फॉरवर्ड, दैट वी आर रेडी टू थिंक अपॉन एंड टेक इट टू द गवर्नमेंट. पेन पॉइंट के ऊपर कोई डिस्कस ना करे, लेकिन कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज कम एंड as Mr. Jayaraman ji came out with some solutions. Okay, that solutions already we are having and we have taken a note of it. If you people have something else, please come ahead and I would like to keep a note of it. Please, anyone, you can please raise your hand and I think Mitesh, point one by one we can ask them and we can take it. Rajesh bhai, आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हो. Please. या मैं फिर से एक बार just 1 minute, can I intervene? CA Bhavin Mehta. I am a chartered accountant from Coimbatore. I am also associated with a jewellery here in Coimbatore. Can you start your camera, please? I request if anybody want to speak anything, please open your camera. Camera. Yeah. I can't. No worries. Yeah, Mr. Iyer, please go ahead. Yeah. My name is Sabhapati Iyer. नहीं, मेरा एक ही पॉइंट है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ स्टॉक वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, बट स्टॉक वैल्यूएशन इज नॉट टैक्स्ड. Actually, when you are selling at a higher prices, we have to arrive at the cost of sales also, no? See, the cost of sales will be either average or it will be FIFO. We cannot say that because we cannot say that my only stock is being taxed. No, stock is not being taxed. What is being taxed is your sales minus your cost of sales. So how can you justify that, I will not pay when I am selling at a higher price? Nobody is selling at a lower price, So I don't know. Agreed. Because this proposal. Sir, you are absolutely right, because these people are using the replenishment model. So they are thinking that मेरे पास 100 किलो माल था, वो 100 किलो माल मेरा ancestral property है. I don't want to touch into that. And whatever I am keep on selling, I am buying and replenishing it. So they are not considering the cost of sales. Actually, what you are selling is right. Section 145A is very clear. It is lower of cost or net realizable value. So they have given enough provision whereby say that we are not taxing your stock. What we are taxing is the sales only, the profit which you are earning. So that is clear, sir. Yes, that was the only point I wanted to, because even absolutely at the level of government, they will say that we are not taxing your stock. We are taxing only your profit, which is sales minus cost of sales. Absolutely clear. Absolutely agree.
Yeah, Yeah. there's Samsung SM S938B. I think name is not there, so difficult to. Yeah, please go ahead, sir. Yes, go ahead. Sir, you have raised your hand, sir. Please speak. Unmute yourself, please. Yeah. Please unmute yourself. I Okay, think anyone else who wants to speak in Anurag this was time? there. Yeah. यस सर गुड मॉर्निंग एवरीवन Yeah, go ahead. सो मेरा पॉइंट ये था सर कि there is a method which is used by some other industry which is called specific identification method for Which closing stock industry? values. Yeah. Which industry? Uh, so let me recheck on that and let you know. So I will just let you know कि क्या होता क्या basically उसमें क्या basically. So in that method each and every item is उसका जो profit है वो उसके खुद के जो cost है उससे निकाला जा रहा है. सो बेसिकली दैट प्रमोट्स कि हर एक आइटम को एक यूनिकली उसको टैग करें एंड देन उसके बाद उसका जो कॉस्ट है वो उसके पास है वो जब वो बिकेगा तब उसकी कॉस्ट हमको पास एग्जैक्ट कॉस्ट मिलेगी एंड उस एग्जैक्ट प्रॉफिट में हम टैक्स भरेंगे. इट्स नॉट लाइक कि एवरेज या फीफो किया जाए. सर कौन सा ज्वेलर स्पेसिफिक स्टॉक टू स्टॉक आइटम का ये रखता है Sir, कि if उसका डिटेल से sir, वैल्यूएशन दे we पाए? have to think humanly it is possible. आई अंडरस्टैंड इज वेरी डिफिकल्ट लेकिन इट अगर इज एचयूआईडी आ इम्पॉसिबल जाएगा बॉस. और एचयूआईडी ट्रांसफर हो जाएगा तो आई थिंक this is something which the नहीं नहीं government will हाउ well I know it's not possible, not everyone will agree, but government can agree on this. That's my suggestion. नहीं, if government agrees गवर्नमेंट के then it will पास be a तो bigger I guess problem. Kala Mandir is doing it. तो हम एक्सप्लेन करके देंगे और उनको वो कॉन्क्रीट लगेगा तो गवर्नमेंट एक्सप्लेन हमारा एक्सप्लेनेशन लेके सुन लेगी. और वो एक बात समझने की जरूरत है कि दे आर एक्सपर्ट. वो सब आईएएस है. ऊपर से भी उसमें से बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी उनकी एक लॉ फर्म होती है उनसे वो सब जानकारी लेते हैं. तो हम कोई भी ऐसी चीज तो उनके सामने नहीं रख सकते कि हमने बोल दिया और मान लिया. तो उन्हें बेस देना पड़ेगा. अगर बेसलेस बात करेंगे तो वो पकड़ के कूड़ेदान में डाल देंगे. नहीं बट अनुराग अगर ये आ गया तो दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा. हमको और एक बड़ा जूम मीटिंग करना पड़ेगा क्योंकि वो वन टू वन मैपिंग तो अपने इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है. अनुराग जी, आज की डेट में जो हमारा इन्वेंट्री सिस्टम है, वैसे वेयर आर यू फ्रॉम सर, विच ज्वेलर यू आर? लखनऊ से हूँ सर मैं, फ्रॉम भागीरथी मार्केटिंग पुष्कर सर. आई सी. तो आज की डेट में सर मेरे हिसाब से अगर से इंडिया में 100 ज्वेलर हैं तो 100 में से मेरे ख्याल से सिर्फ एक ज्वेलर, मतलब 100 भी नहीं, मैं तो पूरे ज्वेलर्स के बीच में सिर्फ एक ज्वेलर होगा जो शायद तनिष्क होगा, जो पीस टू पीस रखता है आइडेंटिफिकेशन के साथ में. जो आप बात बोल रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि एनीबडी कैन आइडेंटिफाई देयर थिंग्स in such a way for this particular thing. So matlab your idea is good to identify piece to piece and then ask for the taxation, but are we ready? Are you maintaining the stock like that? So they are jewelers which are doing it. लेकिन ऐसा नहीं Is कि it नहीं, लेकिन possible for other jewelers on a pan India basis? It is pan very India difficult. basis के ऊपर वो I understand sir that अभी this is very इसके साथ challenging तनिष्क और का नाम लिखा. I think मुझे नहीं लगता तनिष्क भी करता है. 99.9% jewelers will not be able to, they are not ready right now. But अगर HUID ट्रांसफर एक जो है जो सच में आप मतलब कि सर वो आगे की बात है. अभी अपने को सिर्फ इसी की बात करनी है. आगे की बात अपन आगे करेंगे. HUID ट्रांसफर इज अ सेपरेट सब्जेक्ट. श्योर सर, श्योर. यस सर. Yeah. और मिस्टर सैमसंग. From Samsung. Sir, Yeah, hearing, good. sir? Yeah, now you are. Yes, sir, I am Dev Prakash from Coimbatore Manufactured Jewellery Association, sir. Okay. Thanks for organizing and hearing about GJC. Thanks for you, sir. Sir, we are welcome our association. I will be proud to our association to bring as a national issue, sir. This is, sir, in the inflation, we are happy to see the healthy of the अच्छा चल रहा था और इसमें बीच में फोन. Sir, you have mute yourself. Please unmute yourself.
Yeah, okay. Go ahead. Sir, thanks for hearing, sir. Sir, in the inflation, the balance sheet is healthy, but it is in product, it is not in productivity, sir. For example, if the rate is 14,000 now, January 1st, in the December 28,000, then you will see our stock is 15% of stock will be reduced. Sir, it will be know everybody, sir, these things. Sir, I have a 500 grams. I want to make a Odianam as a jewelry, 5 pieces per month. I have committed a order. If the capital is reduced, I cannot make production for 5 Odianam in every month. So we Sir, are with you. my physical stock should be reduced. Solution. We are with you. We know your problem, sir. Sir, no way our physical stock should not be reduced, sir. This is our prayer, sir. Thank you, sir. Thank you. Got it. Yeah, now Mr. Prashant Uday Kumar. Hi, sir. Good evening, everyone. I think it's a very productive discussion and a very timely discussion also. A gentleman before me told like that closing stock is not being taxed. Only the gross profit is being taxed. So the formula of gross profit is sales minus cost of goods sold. When your closing stock is inflated, the cost of goods sold formula is opening stock plus purchases minus closing stock. When the closing stock is inflated, the cost of goods sold reduced, thereby creating an artificial gap between sales minus cost of goods sold, leading to higher gross profits. So what we can probably do is, for the purpose of financial statement, we can adopt the FIFO or weighted average method. But for income tax, like how we have this alternate minimum tax or minimum alternate tax for companies, can we propose alternate minimum tax for jewelers? So thereby, like if actual profit as per books or alternate minimum tax, whichever is lower, that has to be paid. That has to be recognized in balance sheet as deferred tax payable or such items, so that, or we can work on a presumptive income scheme so that our accounting practices align with IFRS, Ind AS, ICDS. Whereas for income tax purposes, we have this alternate minimum tax or minimum alternate tax or presumptive income scheme that can be worked out for jewelers. In such ways, like it will be beneficial on a cash flow viewpoint for jewelers. So that is my humble submission, and it is open for you to answer, sir. The point noted. We have noted this minimum alternate tax mechanism. Yeah, thank you. Thank you. And one more thing, like when the number of churn is more, FIFO, LIFO, weighted average doesn't make big difference. Like the wholesalers, if they are churning for 15 to 20 times the amount of base stock, doesn't make a big difference. For retailers like us, where we churn 2 or 3 times, the impact is so huge. One financial year, we report huge profit. Next financial year, we show huge losses. For listed companies, it is much more misleading to investors. Their stock price will shoot up because of unrealized profit. Whereas for unlisted company, it is all, we'll have to depend on bank borrowings for that extra tax paid, and we'll have to pay interest for that. It is as if like all the real profits are paid A either small to request, bank. sir. A small request, sir. Keep it very short. Whether the listed companies or non-listed companies, it does not matter to us. We need to work on very crisp suggestions. Please, that will be the best way. My only point is this really unrealized profit is inflating profits, and the companies which are being listed are getting more hype. That's it. Thank you. Yeah. Prashant, from the grassroots to the elite, everyone should get benefit of our suggestions. Thank you, Prashant. Just one more point. I don't understand where is this unrealized profit coming. It's all profit only. It's all profit, sir. Since you are selling, you are selling at 13,000. So your cost of sales you are charging. That is, you are getting average. I am replenishing at 13,000. No. So if you are selling at 13,000 and if your average cost is say coming at 8,000, so you are paying tax on the.
See, when I replenish, it becomes part of my closing stock. See, March month purchase will be part of my closing stock. When we do this No, but opening stock, then we are coming to inflation costing, because inflation costing is not considered anywhere in the financial accounting, because that element of inflation is there in each and every industry. You can't say true, that but it this is is only very there extraordinary in situation for jewelry jewelry industry. industry. Yeah, now. So Prashant, what Mr. Iyer is saying is right. So it is something like your opening, if you go by FIFO, your opening stock is sold first. So it is nothing like that they are taxing your stock. True, but when closing stock is inflated, the cost of goods sold goes down. Just because you are looking at the replenishment thing, you feel that, okay, whatever I sell, I again buy back and that my opening stock is intact. Something of that sort. Okay, Yes, sir. anyways, point noted. Arpit, yeah. Arpit. Yeah, Mr. Arpit. Yeah, good evening, everyone. Sir, recently we are getting some news from few other retailers and a few other business consultants also. They are advising us that, matlab, I don't know that this is fact or not, but I just wanted to know that we can do like this or not. They are advising us that few corporates have lent their gold from one company to other company, and they just collect the rent on that amount of gold, and by this process their NP and GP goes down. Is this true, or is this a valid solution, that whatever they are doing, or is this legal? I think Bhavin I'm bhai, not aware that they I'm are also lending not and aware all of that. this. I'm not aware. Okay. I can just add a word here, Bhavinji. Yeah. By company law, you cannot do any intercompany transaction. It should be at an arm's length transaction. So you cannot do any such transaction to evade or, apparently to evade law. Sir, I think what he says that if I am a proprietary company, Yeah. if I transfer all the stocks to somebody, and if I get the metal in loan from somebody, and then Yes. at the end of the 31st March, everything is been borrowed from somebody. So there won't Yes. be any this issue. I think he's telling like that. Yeah, Yeah, I'm that is telling called gold something like leasing. this. Yeah, it's Yeah, called gold gold leasing. leasing. Yes. Yeah. Yeah, So it's valid, but is this legal, or will it work to reduce our profits? We will have to check it out. We'll I check and think let you know. अर्पित जी उन्होंने तो हेज कर दिया ना, तो कमाया ही नहीं है ना, बात सही है ना। सर आप गोल्ड पे देखिए, सर दो ऐसा चीजें दिखा हैं, रहे हैं कि गोल्ड दो पे रेट चीजें पे नहीं हैं, किया। दो यस चीजें अर्पित भाई, एक तो हमारे यस इन्वेंट्री प्रॉफिट है और एक हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट है। तो ट्रेडिंग यस प्रॉफिट में तो टैक्स भरने के लिए सभी लोग रेडी है, लेकिन हाँ इन्वेंट्री प्रॉफिट जो हमारा स्टॉक का रेट बड़ा है उसका हम्म अगर हमने हेज कर लिया है तो वो इधर प्रॉफिट, वो उधर में लॉस हुआ तो वो हेज हो गया ना, तो उसमें तो आना ही नहीं है। लेकिन कोई ना कोई एक कंपनी में कुछ तो आएगा, तो आई थिंक वो कोई मैटर नहीं है सर, ऐसा ये मुझे। तो एक कंपनी से दूसरे कंपनी को केवल एक रेंट दिखाते हैं कि ये इतना रुपया रेंट लगा हाँ, अपना लेकिन गोल्ड का, हाँ, स्टॉक का। जैसे जैसे दिस इज एक समथिंग प्रॉफिट लाइक दैट कि मेरी एक बिल्डिंग है, लेकिन अर्पित भाई मैंने उसको वो यहाँ का रेंट पे प्रॉफिट स्टॉक रखा वहीं है। चले गया उसी ना, कंपनी जाए कैसे? एक वो प्रॉफिट स्टॉक से प्रॉफिट चले गया, उससे फायदा क्या हुआ? सर उससे केवल ट्रेडिंग प्रॉफिट ही कैलकुलेट होगा। नहीं, देखिए एक किसी एक का तो इन्वेंट्री होगा ना। सर इन्वेंट्री तो सर जैसे फर्ज करो मेरी एक बिल्डिंग है, मैंने हाँ, रेंट पे दे रखा है, तो सर बरोबर। जो मुझे रेंटल इनकम आएगा मुझे उसी पे टैक्सेशन करना है। तो ये उसी तरीके से हो गया कि जो मुझे ट्रेडिंग इनकम आ रहा है मेरा टैक्सेशन उसी पे होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। मतलब वो अर्पित जी आप जो बोल यस रहे हैं सर। ना, अर्पित जी ये अपने सर को आई क्या, आई हैव आल्सो हियर्ड विद समबडी बट अर्पित आई जी डोंट नो एक दैट सेकंड, दिस इज लीगल और अर्पित जी नॉट। एक सेकंड यस सर, अभी अपने को सरकार को क्या देना है ना, अपन उसके लिए बात करते हैं। ओके ये सब्जेक्ट सेपरेट है, उसके ऊपर अपन अलग से समझ सकते हैं, क्योंकि ओके आई ओके थिंक इंडिविजुअल अकाउंटिंग इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगी। लेट अस फोकस ऑन व्हाट इज टू बी सजेस्टेड टू द गवर्नमेंट फॉर द टैक्सेशन पर्पस। ये जो चीज है ये इंटरनल आपको क्या करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक दैट यू कैन टॉक डायरेक्टली टू दिस इज रिलेवेंस सर, दिस वाज रिलेवेंस विद ट्रेडिंग प्रॉफिट टैक्सेशन ओनली। नो नो सर, एक चीज है आप ये समझिए कि आज अगर से आप कोई चीज चेंज करोगे तो कल Yes. का तो टैक्स भरना है ना आपको। एग्जैक्ट। और आप जो एग्जैक्ट आज आपके पास जो स्टॉक है उसका आप क्या करोगे, वो थोड़ी आप वो बेच रहे हो तो आपको उसका तो पूरा टैक्स भरना पड़ेगा।
आगे जब लाओगे उसकी आगे की बात है. So right देखिए now, नहीं what नहीं we are focusing is what to do with the current profits which we are having. नहीं How लेकिन to safeguard ourselves on that. अविनाश भाई, अर्पित भाई का जो कहना है ना, उसमें एक ट्विस्ट है, मैं बताता हूँ. रेंट पे जब हम कोई जगह देते हैं तो वही जगह फिर से वापस लेते हैं, और इस इसमें स्टॉक चेंज हो जाता है, तो इट इज नॉट अलाउड. ओके. हाँ, इसमें स्टॉक चेंज हो जाएगा ना. स्टॉक जो मैंने दिया वही रेंट रेंट उसी का मिलेगा ना. अगर मैंने आज एक कार दिया है, मैं दूसरी कार ले लूंगा तो रेंट कहाँ हुआ? दैट इज सेल परचेस. एनीवे, ओके. आई थिंक मिस्टर अमोल इज देयर. ही वांट टू से समथिंग. मिस्टर अमोल. Hi, everybody. Thank you for the opportunity, Rajesh. Wish you all a very happy new year. I think what he was getting confused about is what we spoke about during the GJS. I had spoken to you and Avinash about it, how we have developed the gold leasing model. It is something very different from what he's talking about. I think he must have heard about gold leasing, but the basis of gold leasing is very different. It cannot be, it cannot be leased from their own company to another company. Sorry to So interrupt. probably that's a different matter Can you altogether. introduce I'm yourself, just trying to please? clarify. Mr. Amol, can you introduce yourself, please? Rajesh, we met during GJS. I am from BK Sarab Jewellers, Lucknow, and we have built the Bharat's first gold leasing model, which we have already done our POC for the last 6 months. And we spoke about how we are already working on introducing gold leasing and trying to work on mobilization, gold mobilization in India. Okay, great. My name is Uma Shankar. Yes, Uma Shankar ji, please. Yes, sir. I'm just explaining Mr. Prasant's told just now regarding Your sound valuation. Yeah, voice is very low. Can you speak? Not audible, sir. Hello. Yeah, yeah, Can you yeah. hear, sir? Yeah, yeah. Now it's little. Hello. मेरे तो लाइट आ रहा है अभी. Sir, actually, Yes. the closing stock valuation is increasing because of we are not replenishing on March sales. That means if you have 10 kgs in the April, in the closing stock, if you have 8 kgs, means you are sold 2 kgs on the average price. That means if it is average opening stock value is 9,000, means you are selling on 31st March. If it is 14,000, means you are directly paying 5,000 rupees profit. If what I am saying, for that 2 kgs, you put on the reserve account or in stock value, you show separately about the unrealized stock. I mean, if you purchase that that stock on the April only, you are replenishing the stock on April month only. So if you buy in the March also, March means your average stock will increase only 500 rupees or 1,000 rupees. If you are not buying on the March, that that the profit 5,000 rupees will increase on the for 2 kilos. That is my point, sir. Did you understand, sir? If you have any doubt, please ask me, sir, please. Okay, we got it, sir. Anyone else? Surbi, Karthik want to say something, na? Videsh, please unmute Surbi bhai. थिंक अभी शायद सभी के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट, तो आई थिंक वी मस्ट कंक्लूड नाउ. Anybody else who has to speak something? I think Prakash ji was there. Himanshu Jain is Himanshu Jain ji. Yeah, please. Hello. Yeah, Himanshu Jain. Sir, I think there is no issue of a stock valuation. There are issue of a high pricing inflation. तो होता क्या एक्चुअली कि अपन जब बाय करते हैं न्यू गोल्ड, तो न्यू गोल्ड के कंसीडरेशन में क्या होता है कि अपन धूमे को रिप्लेस जब अपना स्टॉक सेल हो गया, तो उस केस में सबसे बड़ा इशू यही होता है कि प्राइसिंग इन्फ्लेशन के हिसाब से अपना प्रॉफिट रेजिंग हो जाता है. तो वी कैन रिकमेंड टू गवर्नमेंट कि एक प्राइसिंग फिक्स कर दे
ईयरली बेसिस पे, तो उस बेसिस के ऊपर अपना जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो वैल्यू हो सके, और रिमेनिंग जो पोर्शन है दैट कैन बी टैक्स एज ए स्पेशल इन्फ्लेशन रेट टैक्स। तो उससे प्रॉफिट और टैक्सेशन दोनों ही गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाएगा और ज्वेलर्स के लिए भी। So what is the thumb rule to fix the price, sir? It will be very difficult, no? So that can be based on, sir, the previous data, just like cost inflation. So that can be considered. So who will decide that? The industry should decide, or the government or decide, or the lawmakers should decide? No, some members of industry and government by making that committee for deciding that rate. Yeah. Now, Mr. Manmeet. बस Mr. Manmeet Singh. हो गया, बहुत हैवी हो गया सीन। So this side Ranmeet Singh from Dehradun. Yeah. I'm into jewelry industry, Khalsa Jewellers Dehradun. I want to say that if we are talking about the inventory we have and the tax which we have to pay, we must make a committee and we should talk to the senior government members so that they should give us a solution that the value addition tax should not come on jewelers, because it's the basic. We have old inventories in our stocks, so how can they can give us they can ask for the inventory this thing tax. Got So it, Manmeet जी। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दी कि हमारे पास जो पुराना स्टॉक है उस पर क्यों आता है, क्योंकि स्टॉक टर्न जब से एक से ज्यादा का स्टॉक टर्न हो जाता है हमारा, तो ऑटोमेटिकली एवरेज बेसिक पे आ जाता है, और ये थंब रूल है इतने दिनों से जो मार्केट में काम कर रहे हैं। बट देन ऑल्सो आज का मीटिंग लेने का पीछे कारण ही यह था कि हम लोग हमारे इंडस्ट्री का एक मैंडेट ले ले और इंडस्ट्री क्या सोचती है, और उसके हिसाब से हम लोग 100% एक अपना और भी इसके ऊपर कंसल्टेंट से और भी इससे कुछ व्यूज लेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। जी, थैंक यू सो मच। Can I come in, Rajesh? Yeah, Sriram sir. Sriram sir, yes. श्रीराम सर आप बोलिए, लेकिन मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है, please give only the suggestions. Pain points everyone knows. In case if somebody is coming up with the solution, then only it will be better, because again and again we are listening only the problem that everyone is reducing their inventory. We all understand that everyone is reducing the inventory, plus please give the solution. Sriram sir, please go ahead. Yes. See, our fellow jewelers are worried about replacing gram to gram. So my opening stock remains the same, but value alone is going up. If you don't replace, your sales will get reflected into the total GP. So your opening stock value is 5,000 and you are selling at 10,000, then 5,000 will be taxed as a profit. By replacing it only, it becomes 6,000, 7,000, 8,000 like that. So thereby replacing only, you are deferring the profit. We need not ask for a deferring of the tax. The weighted average itself is giving you that proposition. This is my humble submission to the people who are telling I am always selling and always replacing it in my counters. Because of that only, your weighted average rate is going slowly, not that volatile. Fantastic analogy, Sriram sir. Fantastic. Thank you, Sriram. Can I speak, sir? Yeah. Sir, myself, Prasanna from Coimbatore Jewelry Manufacturer Association. I have been checking this for last 1 month, sir. I want to explain about the China system, what they follow in their accounting standards, in billing and accounting standards, sir. I have checked that they are billing the system for jewelry. They are splitting the two system, one for the metal rate and one for value addition, and other is for the VAT or GST according to their country. For 92, if they sell a product for 10 grams and per gram rate is 13,000 per gram, the product rate may be 1,50,000.
For 13,000 for 10 grams, they split the price for 10 grams, 13,000 and Prasanna sir, it has been already presented by the CGMA and it has already been taken care. So please, sir, again and again, don't repeat the same things, please. Please, sir. Okay, the point which is left out, I will tell it, sir. The what in the what we are putting for 92, we can credit in a replacement ledger, and we can open a bank account, and we can put the amount in the separate bank account in the bank, escrow account. We can use that fund for only for the metal purchase. Prasanna ji, we don't have money only. How will we put in the bank account? The jewelers are What, not sir? having money to put in the escrow account. Yeah, escrow account we can maintain, and we can use only for the metal value. The jewelers are not having money only to park in the escrow account. They're not having money. After sale, after we are putting the sale, we can put the value of the only the metal value we can, which we have shown in the sale bill. We can put in the bank account. Only we can use that fund for only for metal purchase, and we replace the sold stock. Then only the leftover value addition we can opening and closing value addition, we can take it as a profit. Prasanna sir, please send your that thing, sir, and that has already been presented to us by Muthu sir and Jairam sir. So one more thing, sir. One more thing. Actually, I have taken the list Sir, for there the are top other 10 people countries. also, sir. There are other 1 people minute, sir. also. 1 minute, sir. I am working for one month, sir. Just give me 2 minutes. Sir, actually, I have taken the list for top 10 countries. China, India, United States, Turkey, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Russia, Iran, Vietnam, and Thailand. No countries tax the capital value of the stock. Only India is taxing the capital. In India, we have taken the gold as a trading stock. All other countries treat this as a capital stock. They all countries are replacing the metal what they sold. They are not taxed. Only at the time of taking the gold outside the business, that time the metal is taxed. What the value is sold is taxed. Up to that time, no country is taxing the capital of the stock. This one we have to represent to the government. Prasanna ji, we got your point. You just give this document to sir. He will send it to us, so it will be very comfortable. Thank you. Sir. Yes, sir. Urjita, please give your introduction first. Yes, Then sir. Hi, everyone. My name is Ajinkya Nashikar. I'm a chartered accountant myself. I'm speaking on behalf of GB Nashikar Jewellers Dhule. Sir, my question is to CA Bhavin Mehta, sir. Go ahead. Yes, sir. I wanted to ask कि जैसे हम लोग अगर कोई लैंड या बिल्डिंग सेल करते हैं लास्ट क्वार्टर में, तो उसका एडवांस टैक्स का पेमेंट भी लास्ट क्वार्टर में ही करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ये सेल होने वाला है. ठीक है, तो जैसे गोल्ड प्राइस में भी हाइक होता है, तो उसका एडवांस टैक्स का अगर हम लोग कम भरते हैं एवरी क्वार्टर, तो उसका इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है. सो कैन वी सजेस्ट सम प्रपोजल टू द गवर्नमेंट कि जैसे लैंड या बिल्डिंग सेलिंग को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही इस तरीके की एडवांस टैक्स पेमेंट अगर हम लोग कम भरते, तो उसका इंटरेस्ट हमको ना लगे पहले क्वार्टर्स में. इट्स अ नाइस आइडिया, मतलब रियली अप्रिशिएटेड. मुझे लगता है ये सही में बहुत काम की चीज हो सकती है. इट इज Bhavin bhai, just make a note of this. Thank you. Thank you, sir. Chairman, can I come in? Yeah, Anilji, please come. Please, please. Good evening, everyone. Anil Sankhwal from Delhi. So the last suggestion is a very important suggestion. Yes, let us pay tax as and when the income is earned. That's the main point. Secondly, we are talking about valuation of stock. Now, the valuation of stock has to be as per the stocking our valuation method, and there is no way that we can avoid paying tax. आपका मेथड अगर आपका कॉस्ट पे है तो कॉस्ट पे आपको जब बेचेंगे तो उसका प्रॉफिट देना पड़ेगा या वेटेड एवरेज के ऊपर. सो आई थिंक डिस्कशन ऑन दैट to government will not really help. We want them to defer it to a certain level. That's a different matter, but I don't think that will work. Valuation method is what we have to talk about. We can do something about it. Bhavinji, you suggest something that will be much better than, we are discussing many more things
But the crux of the matter is only valuation and taxation. Thank you. Thank you, Anil ji. Yeah. Dhaval Vindi ji. हाँ नमस्ते राजेश जी अविनाश जी भाविन भाई Yeah, Dhaval Namaste, bhai, namaste. please. जी Yes, Dhaval. मेरा क्वेश्चन ये था मैंने एमसीएक्स से मेटल परचेस किया हुआ था अगस्त महीने में समथिंग अराउंड 8,000 रुपीज पर ग्राम पे और आज मैं उसको डिलीवरी ले रहा हूँ 14,000 पर ग्राम पे मैंने फरवरी में लिया हुआ था तो जो डिफरेंस मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है एमसीएक्स से 6,000 रुपीज पर ग्राम क्या मुझे उसको एज ए प्रॉफिट दिखा के उसके ऊपर टैक्स भरना होगा या मैं मेरी परचेज उसको लेस करके अकाउंट कर सकता हूँ धवल भाई, इसका आंसर मैं आपको अलग से बोलूंगा। अभी क्या है, ये जो अपना पॉइंट चल रहा है ना, उसका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में ये है। दिस आई विल रिप्लाई टू यू सेपरेटली, डोंट वरी। ओके फाइन फाइन थैंक यू ओके, करण। ओके, निमिष पारेख। earlier கணக்காமிக்கிறோம் அந்த மாதிரி தான் அதுவும் Bhavin sir, that is depends upon the value in their tax invoice. Sorry? हाँ जी, बोलो हेलो निमिष भाई। हाँ निमिष भाई, भाविन टाइमिंग। भाई भाविन भाई हर इंडस्ट्री का एक परसेंटेज होता है प्रॉफिट का आप हाँ सब इंडस्ट्री को ट्रीट करते हैं तो उस हिसाब से अपना टर्नओवर पे यदि कोई इंडस्ट्री का प्रॉफिट गवर्नमेंट फिक्स करे या अपन इंडस्ट्री फिक्स करे जो कि मिनिमम साइड में हो और अपना जो अभी जो प्रॉफिट निकले जो टैक्स निकले वो और ये दोनों कंपेयर करके विच एवर इज लोअर वी कैन वर्क इट आउट सम परसेंटेज सर, कोई 5% हो 10% हो 15% कोई हो 1% जो इंडस्ट्री का है टर्नओवर के ऊपर ही हम टैक्स दें सर कोई बिजनेसमैन का इंडिविजुअल प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, वो कैसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगा? अगर वो हो गया तो और दूसरे प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे सर। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। बट सर एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के इन्वेंट्री के मतलब इन्वेंट्री को छोड़ के टर्नओवर के ऊपर हम चिंता करें तो टर्नओवर के ऊपर टैक्स देने के लिए यही एक रास्ता बचता है टर्नओवर के लिए पार्लियामेंट में उनको चेंज करना पड़ेगा। इट इज नॉट सजेस्टेड, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसमें पार्लियामेंट में उनको चेंज करना पड़ेगा कानून को। एक्सपेंडिचर टैक्स पे गवर्नमेंट काम कर रही है अकाउंटिंग कम से कम करने के लिए। वो फ्यूचर में ये जो बोल रहे हैं वो आने के चांसेस है। करेक्ट सर आई कैन अंडरस्टैंड सर आई अप्रिशिएट इट थैंक यू ओके, लास्ट वी हैव करण। या टेल मी। सर मेरा ही अगर हम सिर्फ स्टॉक आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है करण। हेलो आई कैन नॉट हियर यू। हेलो नहीं, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी आ रही है हेलो ओके, हाँ बोलो बोलो। मेरा ये बोलना था कि हम स्टॉक की वैल्यू को ना चेक करते हुए अगर हम स्टॉक का डिफरेंस कितना है या ओपनिंग स्टॉक जितना है उसी के कंपैरिजन में क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो हमारा टैक्स की जो वैल्यू आएंगे मतलब जो हमारा प्रॉफिट है वो कम आएगा। एंड नेक्स्ट थिंग कि जैसे रियल एस्टेट में होता है कि जो प्रॉपर्टी हमने 2000 के पहले परचेस की है तो उसका वैल्यूएशन गवर्नमेंट 2001 के हिसाब से कैलकुलेट कराती है एंड उसका जो डिफरेंस है उसके ऊपर हमको टैक्स भरना पड़ता है। तो सेम हम ये कर सकते हैं क्या कि फर्स्ट हाफ ईयरली का वैल्यूएशन करके हम उसका अलग से प्रॉफिट कैलकुलेट करना और जो नेक्स्ट हाफ ईयरली है उसका हम अलग से प्रॉफिट कैलकुलेट करके फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको हम ये कर सकते। तो वो कंडीशन में हमारा ओपनिंग जो रहेगा जो लास्ट अप्रैल का था वो फॉर एग्जांपल 80,000 का है और हमारा 6 ईयरली का अराउंड नहीं वन नहीं, वन गॉट इट लैख करण, और यू आर टॉकिंग ऑफ। नहीं, मैं समझ गया, आप इंडेक्सेशन बेसिस की बात कर रहे हो, जो यस इन्फ्लेशन है यस जो और ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो ठीक है, दैट पॉइंट इज नोटेड।
Okay, I think Rajesh bhai, we can close and I think more or less सबके suggestions on a similar ground आ रहे हैं. Sir, one suggestion is also there. Can I speak? Yeah, बोलिए Hello. बोलिए. CA Rahul Mundara from Dulia. I am speaking Yes, on sir. behalf of Naukar Gold Dulia. Sir, हाँ can we बोलिए. convert our stock in trade into a fixed investment? नहीं, कैसे कर सकते हो? इसमें कैसा होता है कि भाई जैसे मेरा ज्वेलरी शॉप है, हाँ कैन आई स्पीक इन हिंदी ना, चलेगा ना? हाँ बिल्कुल बोलिए. मेरा ज्वेलरी शॉप है, मेरे पास लोग मटेरियल देखने के लिए आते हैं, तो मैं वो कुछ स्टॉक जो है वो परमानेंटली मैं कुछ अलग रख सकता हूँ क्या? मतलब उसको मैं सॉर्टेड कर सकता हूँ क्या? ट्रेडिंग स्टॉक अलग नहीं, और मेरा फिक्स स्टॉक अलग, दैट कैन बी आइडेंटिफाइबल. वेरी डिफिकल्ट. उसका डेफिनेशन सब वो वाला परमिट नहीं करता है कि योर स्टॉक इन ट्रेड को आप इन्वेस्टमेंट लेके जाओ या कैपिटल कर दो. दैट इज नॉट पॉसिबल. नाउ आई एम अ मैन्युफैक्चरर. नहीं, आई अगेन अंडरस्टैंड. वन इफ यू थिंग. आर अ मैन्युफैक्चरर, हाउ कैन यू हैव समथिंग लाइक, क्या बोलो, आपका तो स्टॉक इन ट्रेड ही है ना. इतने साल से आप स्टॉक, उसके ऊपर आप वर्किंग कैपिटल ले रहे हो, बैंक के साथ फाइनेंसिंग करते हो, सब कुछ है, तो आप कैसे उसको फिर कैपिटल बता सकते हो? सर पॉसिबल ही अभी नहीं मेरे है. को 100%, चलो अब ये चीज मैं आपके एग्री कर गया. मेरा सेकंड क्वेश्चन ऐसा था, मेरा रूटीन ट्रेडिंग चल रहा है ज्वेलरी के अंदर, ओके? हाँ मैं बुलियन बाय कर रहा हूँ एंड दैट हाँ कैन आई केप्ट इनटू इन्वेस्टमेंट. बॉस, आप एक बात समझ लो. एक्चुअली व्हाट यू आर टॉकिंग इज कि आप जो रेप्लेनिशमेंट मॉडल में चाह रहे हो ना, सच में आपका ओपनिंग स्टॉक जो होता है ना, सबसे पहले उसमें से आपका माल बिक रहा है. लेकिन जस्ट बिकॉज यू 100%. डू रिप्लेसमेंट, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप सेल कर रहे हो वही आप बाई, जो बाई नो करते हो नो फिर नो से, नो नो मतलब नो वही आप ये चला. सर मेहता सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा हाँ सा अलग था. मेरा क्वेश्चन हाँ अलग था. मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई मैं अगर ज्वेलरी, मेरा ज्वेलरी का ट्रेडिंग चल रहा है पूरा, हाँ बराबर, मैं बाय कर रहा हूँ और मैं सेल कर रहा हूँ, हाँ और मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है वो फर्म के अंदर. हाँ अगर मैं बुलियन परचेस करता हूँ, प्योर हाँ बुलियन, हाँ दैट कैन बी क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट और नॉट? वी कैन कर क्लासिफाई ना, सकते हो. हम्म. बराबर? अगर मैं उसको इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई करता हूँ और मैं किसी जॉब वर्क वाले को उसको देता हूँ कि भाई मेरे को ज्वेलरी बना के दे, हाँ, नहीं तो अलाउड मैं है. उसको बाद में, उसके बाद में मैं उसको ट्रेडिंग में ले सकता हूँ. तो आप बोल रहे हो पहले आप उसको इन्वेस्टमेंट लोगे, इन्वेस्टमेंट में बाद में आपको जब और मेरे को मन जब होगा तब जरूरत उसको. पड़ेगा, जब जरूरत हाँ, पड़ेगा तब, नॉट नेसेसरी कि मेरे को इमीडिएट जरूरत पड़ेगा. नहीं, आपको तो रोज जरूरत पड़ रहा है ना. आप तो माल ले रहे हो, बेच रहे हो, ले रहे हो, बेच रहे हो, चालू ही है ना. तो जब मैं ले रहा बेच रहा हूँ सर, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एवरेज कॉस्टिंग मेथड में क्या हो रहा है कि मेरा टर्नओवर वन टाइम अगर हो गया तो मेरा जो सी ओपनिंग स्टॉक है वो वैल्यूएशन इज सेल हो गया. डिफरेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक एंड क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट. आप बोल रहे हो कि मेरे को जब मन पड़ेगा तब मैं मेरा वैल्यूएशन यही रखूंगा, मेरा इन्वेंट्री को क्लासिफिकेशन चेंज कर डालूंगा, स्टॉक इन ट्रेड से मैं इन्वेस्टमेंट में घुमा दूंगा, इन्वेस्टमेंट से फिर से स्टॉक इन ट्रेड में ले लूंगा. आई थिंक दैट नहीं विल नहीं नॉट नहीं, बी पॉसिबल. दैट विल नॉट बी पॉसिबल. नो, फिर भी आपको चाहिए तो आप एक बार लिख के बताइए क्या है, आप हमको ईमेल कर सकते हो, विल लुक इनटू इट. ओके सर, Yeah, थैंक यू. some joy, Sochitro. I think this is the last year, and I think then we can close it. I think it's already 7:30. Uh, please. Sir, sir, No, no, Mr. Samsung, I sir, think you I already want had an to. opportunity. No, 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 sir, you okay. already had an opportunity, sir. Now, please, Sir, someone else also speak. sir, ICDS changes have been made for so many industries. ICD changes have been made for so many industry. We agree. We are working on that. Let us see what else we can do it. Yeah, last service is Joy Sir, Sojit. can you put your email ID over here so we can share the Yeah, suggestion on your Nitesh, email? we can put in the chat box so we can do Yes, that. I'm putting my email ID in the chat box. Okay, thank you. Yeah, thank you. Thank you very much, everyone. Regarding capital gains for the customers who are selling while buying the new jewelry, is it going to be discussed now? I think that should be discussed. I think rest now we should stop this and we should discuss for this for another 10-15 minutes max, because it will be very difficult otherwise to speak, keep on going and listening to the same suggestions once again. Can I come regarding that? Yeah, please, sir. Yeah, Sriram. See, for example, in section 54B, if I am correct, income tax, agricultural land being sold and the gains and total is reinvested in the same asset class, there is an exemption. Similarly, we can, when the 2 years back, our finance minister has classified gold as an asset class, into an asset class.
So we can ask for that such exemption, because nowadays, previously on average 40% of our counter sales by metal. Now it is becoming 60, 70 in a days. It becomes 100%. People bring their old jewelry and then take the new jewelry. At least we are satisfied you are able to get that turnover. But if this is going to be the case, if this exemption is also given, it will be the right trial not to everybody to come out with their own stocks in their safe and everything, so that our import will reduce, GST will increase, recycling will happen, industry can also thrive. This is my submission. Point notice, sir, we have Can I taken this suggest matter with something? the ministry. Yeah, Mr. Iyer, tell me. If the ICDS changes in the message, you can see Sir, what industry. we have already taken that into consideration, sir. Please. This is Savapati. Can I talk on this exchange? Sir, one more thing, sir. Sir, please, sir, please. Sir, you know, a recent advertisement, everybody will see. There is a. Yeah, Mr. Sabapati, you can go on. Yeah, Mr. Iyer. Hello. Yeah, Mr. Yeah, Iyer. please, sir, go on, go on. Am I audible? Yeah, please, sir. Yeah. The only point what I am saying is that if I am taking my jewelry to a goldsmith, and if I ask him to change this my jewelry to any other gold, then if it is a job work, there is no capital gain, because I have not sold anything. I have only given the gold and got jewelry made out of that. That is true. Mr. So Iyer, why this exchange should be taxed as capital gain? Because it's only when I'm selling it, then I should be. When it's an exchange, it is so only. I think the differentiation is only if I am going to a goldsmith and getting it converted into another jewelry, there won't be any exchange. But when I am going to a jewelry showroom and exchanging my jewelry, then it becomes subject to capital gain. So this can be a point which can be highlighted while discussing. Yeah, Mr. Iyer, that is what we are highlighting. When the jewelry is changing the form through the job work, what you said is right, but that is like renovating your house. But when you are shifting to a new property by selling this old property, so that is the place where I agree on your other point also, that because the exemption for selling one house and buying another house, that also is available. So Correct. the same also, maybe 2-3 points we can add in that, in this argument. Yes. Thank you. I think, Bhavin bhai, let's take last question from Ashok bhai and then we'll close. Go on, Ashok bhai. Good evening, Chairman and Vice Chairman and all the JCM. See, my submission is that the only thing is that what we feel that the stock what we keep in the trade is been capitalized as and then whatever we sell is replaced. Then the stock against stock will not attract any much. Only the profit will attract the tax, but not the value of the gold. Appreciation of the value of the gold will not attract any tax, I think. That is what my submission. Correct, sir. That is the thing we are asking. So I think it can also be considered for the representation to the government in this way also. Maybe, and all submission after all everybody's suggestions, I think we can have a consultation with the Bhavin bhai and all the experts. Then we can go forward with the government for our submissions. Ashok bhai, you are selling, you are not manufacturing as a principle. No, I am manufacturing. No. For the manufacturing, you are realizing only value addition. There is only that is your profit. But when I purchase from you, you are selling. No, your stock is not remaining as it is. No. The thing is, stock is been capitalized, and whatever we sell from that capital goods. Only if you have the capital, only you can sell it. No. Yeah. See, we are selling in grams. You are selling in kgs. That's all. Being No, wholesale. nothing.
Nothing like that. It is what ultimately gold is gold. Grammage or kilo, gold is gold. No, I think the biggest the issue here is, I think every jeweler is happy when the gold prices are on the higher side. When I am selling and making profit, I am very happy. But when it comes to paying tax on that, we are all A little unhappy. reluctant. No, Little no, reluctant. it is not like that. Nowadays, people are happy to pay the tax also, but it should be realistic, not eroding our capital. Let's. I think we have listened a lot, and we have shared our email address also. In case somebody has some suggestions, please mail it to that particular email address. I think it is time to close, because I think that will be apt, because continuing with that same thing is going to be very difficult. Okay. Thank you everybody for Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Yeah, thank you, thank you everyone. everyone. Thank you, sir, giving this opportunity on behalf of Coimbatore Jewellery Manufacturing. Thank you, Ji. Thank you, everyone. Thank you. Good night. Thank you, Rajesh bhai. Thank you, Avinash bhai. हो गया मेरा